Voting is underway in Punjab for all the 117 assembly seats in a fierce multi-cornered contest. Congress, Aam Aadmi Party, Akali Dal, BSP Alliance, BJP, PLC, Akali Dal, Sanyukt and the Sanyukt Samaj Morcha, a political front of various farmer bodies, are in the fray. While the Congress has come under fire for drug menace and corruption, it is banking on reducing power tariff and Dalit face Chief Minister Channi. The Aam Aadmi Party that came under scanner for alleged Khalistani link is showcasing the Delhi model of governance. Almost all the parties have promised freebies like cash, SOPs, reservation of locals in government jobs if elected to power. Prime Minister Modi, AAP Chief Kejriwal, Congress's Rahul and Priyanka and the Badals have campaigned extensively in Punjab. Last poll saw Congress ending the Shiromani Akali Dal BJP's combined 10-year regime by bagging 77 seats. The AAP had managed to get 20 seats while the Shiromani Akali Dal BJP won 18 and 2 went into the kitty of Lok Insaf Party. After months of fierce infighting, it is D-Day for Punjab, and India Today is getting you minute-by-minute coverage from the ground with the top voices. Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi spoke to India Today's Supriya Bhardwaj. Listen in to this exclusive interview. How has been your journey, sir, so far as Punjab CM is concerned? It's very beautiful. I like to stay in public. Always I like to stay in public. So that's my way of life. So public is giving me the opportunity to work for them. So I am happy that today everybody is encouraging me to come forward. I will come forward and work for the people. Time and again we asked you that there are people who are, throwing allegations against you. There are people who are talking ill about you. But you said, I will just stay with my issues and my work. Actually, I am a man of the public. I was municipal councillor for 3 times. I contested election in school, college. Then I worked as mayor of my city, that is municipal president. Then people elected me independent MLA. Then again Congress gave me ticket and I represented my constituency for 3 terms. So I worked as opposition leader, as minister, as CM. So in whole of my life, there is no allegation against me. It is temporary and election stunt. Nothing is against me. So I want the public to vote for me so that I can work for them honestly. That's my case. So how was the journey from your journey? We have heard from very humble backgrounds to becoming the Chief Minister of Punjab. I am from a very poor family. My father was a poor man and working as a shopkeeper of tent house. So I worked with him and studies as well. So now I am MA, MBA, LLB and pursuing PhD. So this is my passion that I keep myself strengthening. So I hope that I can work hard for the people. हमारे साथ बातचीत करने के लिए भगवंत मान हैं और सबसे पहले वो निशान दिखा दीजिए। वोट देकर आप अभी निकले हैं और ये वोट दिया है भगवंत मान ने। और किस तरीके से आज पूरे चुनाव को देख रहे हैं? लंबा प्रचार आपने किया और उसके बाद आज किस तरह से लग रहा है कि तस्वीर नजर आएगी? आज पंजाबियों के लिए खुशी का दिन है। उनको फतवा देना है तो अगले 5 साल के लिए अपने बच्चों की किस्मत, अपने नौजवान बेटे बेटियों की किस्मत, अपने बुजुर्गों की किस्मत उन्होंने किसी हाथ में देनी है। और
पंजाबी हैं जो हंसते खेलते नाचते अक्सर जाने जाते हैं, तो आज खुश होकर वोट दीजिए। और वोट का अधिकार शहीद आजम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय और डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें ये कार्ड दिया है वोट देने का अधिकार, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें और हंसते खेलते अपने माँ बाप को, दोस्तों को, सबको लेके जाइए और वोट करें। पूरे पंजाब में तमाम बड़े नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री से लेकर, और दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार प्रचार कर रहे थे। काफी पावरफुल इस बार का चुनाव हो गया। आपको लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से रिकॉर्ड टूटा था पंजाब में और काफी ज्यादा वोटिंग हुई थी, तो इस बार भी ज्यादा वोटिंग होगी, उससे क्या आपको कोई फायदा नुकसान होगा? पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में वोट करते हैं। लगभग 82, संगरूर में तो 87, 88 भी हो जाता है। तो पंजाब के लोग अवेयर हैं, उनको पता है कि हमारा वोट जो है उसकी कीमत क्या है। तो पंजाब में रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग परसेंटेज का भी, और मुझे उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज क्या चिंता है आपकी? फिर आप निकल रहे हैं, अब धुरी में लगातार आपको दौरा करना है, आज किस बात की चिंता ज्यादा है इस दौरान जो आपने प्रचार किया? आज क्या चिंता है और क्या उम्मीद है? कोई चिंता नहीं है। हाँ। आज खुशी है। हाँ। चिंता नहीं है, खुशी है। तो लगता है कि पर्याप्त वोट होगा आज? पंजाब के लोग हैं, बहुत भारी संख्या में वोट करते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, खुशी का दिन है। चलिए तो The fiercest battle of Amritsar East is between Navjot Singh Sidhu and Bikram Singh Majithia. Now he does face an uphill task because he's left his own seat of Majithia and is contesting from Amritsar East. How you prepared for today? A lot of hard work has gone in. With the grace of God, good will prevail over evil. And people who have only sown seeds of hatred, who've only sown seeds of contempt and arrogance, people like Mr. Navjot Singh Sidhu done zilch work, zero work in the last 18 years. People are going to get rid of him and they're going to elect a person who can deliver good governance, who can deliver development, who can deliver. Now let's look at both the factors. In 2012, Navjot Kaur Sidhu won. 2017, Navjot Singh Sidhu won. You have won from 2007, 2012, 2017. Now you move positions. But aren't you facing another battle, which is a battle of perception? Because obviously they have connected you with the drug lords. They have said that you are the bad man, so to say, of the Shiromani Akali Dal. How do you fight that? You think you've been successful in kind of fighting off that taint? That's your TRP. People don't say that. My opposition, what they say, and especially what... So Congress has been gunning after you. That's okay. Congress is my opposition. Do you expect them to praise me? Your own channels that you compete against are never going to say that India today is doing a great job. That's part of life. I don't need a certificate, a character certificate from least of all of Congress, who's been embroiled in all kinds of things. And Mr. Sidhu, last 5 years, he's been in government, in every government. He's jumped ship and been part of every government possible. What has he done? The situation of drugs has only got worse, and he's the person who's appointing the DGP downwards to the inspector. So isn't he responsible? It's his people and his cronies and his left, right, center that are promoting it, because the number of addicts is only... So are you a victim of politics of India? It is only politics. It is nothing else but politics, ma'am. It is nothing else but politics. When Mr. Sidhu was with me, it was all okay. It was all honky-dory. It's only when he jumped ship that he had a problem with us. Otherwise, we were his younger brother, and Badal Saab was like his father. And he has a habit of changing parties and changing fathers on a drop of a hat. And he's the biggest opportunist that we have seen. A person who can betray the country. When he goes to Pakistan, he will praise Imran Khan, he will praise the ISI chief. What about people that are being killed by them? There are so many martyrs of ours who laid down their lives for this country. What has he spoken about them when he goes to that country? So, irrespective of what he says, he's most welcome to say what he says. I have the greatest regard for whatever he says, but at the end of the day, people think of him as a joker, and he will remain a joker.
And trust only India Today Network to bring you reactions from across party lines, straight from state of war Punjab. Listen in to some reactions that are coming in at this point. एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले, पंजाब को इश्क करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए। खालिस्तान के जो आरोप लगाए कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के ऊपर, साथ आम आदमी पार्टी के साथ केजरीवाल के ऊपर, देखो जी वो पार्टी जो है उसका ना तो पंजाब के साथ कोई ताल्लुक है, ना पंजाब से हमदर्दी है, ना वो पंजाब, उसको पता ही नहीं कि कितने जिले हैं पंजाब में। हम एक एक गांव में, एक शहर के वार्ड में जाकर संगत दर्शन किए। जी जी, एक एक इंच जमीन का और एक एक आदमी का, एक कितना करने वाले की तकलीफ है, उसको पता ही नहीं क्या करे। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। आज का दिन पंजाब के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। ऐसा भविष्य जिसमें आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उनको अच्छा रोज़गार मिले, वर्ल्ड क्लास सरकारी अस्पताल हों जिनमें आपके परिवार का मुफ्त इलाज हो, नशा ख़त्म हो। ऐसा भविष्य जिसमें पंजाब की 3 करोड़ जनता सुरक्षित महसूस करे। ऐसा भविष्य जिसमें देश की सुरक्षा सर्वोपरि हो। ये सब तभी होगा जब आप वोट डालने जाएंगे। सभी माताओं बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। बाकी काम बाद में कर लेना, वोट सबसे पहले। Captain Amrinder Singh's reaction coming in. Listen in to the reaction that's just coming in. Prestige. Right there. Listen Why in. should it be of my prestige? Elections are elections. People have to decide, but I can tell you that Patiala is winning very well. सर, बादशाहत आपकी यहाँ पर कायम रहेगी? आपकी बादशाहत आपको लगती है जितने सालों से आपकी बादशाहत पटियाला पर कायम थी, वो कामयाब रहेगी कैप्टन साहब? देखते हैं कितनी लीड होगी। आई कांट गिव यू एनी फिगर, बट सर्टेनली लीड होगी पटियाला में, एंड अ वेरी स्ट्रांग लीड। परफॉर्मेंस क्या होगा? पंजाब की जनता के लिए चेंज चाहिए। Nobody can predict. There are 5-6 parties in the field. क्या होता है क्या नहीं होता वो तो टाइम बताएगा, लेकिन मुझे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर वेरी गुड। कई सारी पार्टीज हैं 10 करोड़ रुपए मांग रहा है। हुआ यू आर रिपब्लिक। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या एक बड़े चुनौती के तौर पर इस बार सामने आने वाले हैं आपके लिए, आप मानते हैं? Congress is not afraid, but I think it's a good thing. They live in a different world. They are going to be wiped out in Punjab. खालिस्तान का जो मुद्दा आ रहा है, बिल्कुल क्या लगता है? खालिस्तान का जो मुद्दा पिछले 2 दिन से आ रहा है, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी समर्थन। देखिए, भगवंत सिंह पन्नू is a Khalistani out and out, total anti-national, and he is supporting Kejriwal. And अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा, because अगर तो बात ये फैल गई तो फिर it will be wiped out. सर जी, आपकी बादशाहत कायम रहने वाली है सर। इस बार बनाई है और जनता से आपका हम लगातार देख रहे हैं नया रुझान है। माइक नीचे रखो, माइक। इसी तरह का विश्वास जता इस बार। आधे some celestial beings जो बोल रहे हैं। चलो बस कैप्टन अमरिंदर सिंह 59 assembly constituencies spread across 16 districts of UP are voting in third phase of polls. Voter turnout till 11 a.m. was 21.1%. Akhilesh Yadav along with his wife Dimple reached Sci-Fi and exercised their franchise.
Akhilesh and Dimple also exclusively spoke to India Today and said that BJP government looted the state for 5 years and people of Uttar Pradesh now want change from the BJP. Meanwhile, his wife Dimple Yadav said that BJP has only tried to create false perceptions. The crucial Karhal seat, which is voting, is witnessing a battle royale between Akhilesh and SP Baghel. The BJP had approached Election Commission seeking deployment of paramilitary forces in all booths in Karhal. Samajwadi Party Chief's uncle Shivpal is contesting from his traditional Jaswant Nagar seat. As many as 627 candidates are in the fray, in which over 2.15 crore people are eligible to vote. At least 8 districts lie in the Yadav belt. India Today exclusively spoke to Akhilesh Yadav before the Samajwadi Party chief left to cast his vote. Akhilesh hid out at the BJP, said the Saffron Party has looted the state for 5 years and now people want change. India Today has also spoken to Akhilesh's wife, Dimple Yadav. Listen in. I have Akhilesh Yadav with me. Has arrived in Saifai. He had a very busy schedule yesterday because one of the senior party leaders, Mr. Ahmed Hassan, passed away. Akhilesh, a lot depends on the kind of chemistry that the Yadav family has always been known for in this round of elections. You have tried to bring the entire family together. You have tried to win over certain segments which have not voted traditionally. How does it look today in this phase for you? जैसा पहले चरण में किसान ने, नौजवानों ने मतदान किया, हर वर्ग के लोगों ने गठबंधन के साथ खड़े होकर के मतदान किया। दूसरे चरण में भी वही सब कुछ देखने को मिला है। सवाल यह है कि जनता के जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में किए थे, वो हर वादा उनका जुमला निकला। और तीसरे चरण का चुनाव वो है जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी जीती थी। हालांकि पिछली बार वो हम लोगों को उतना वोट नहीं मिला पार्टी को जितना मिलना चाहिए था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से देखा है लोगों ने कि उनके साथ अन्याय हुआ, जो विकास की गति थी वो रुक गई है। किसान को परेशानी उठानी पड़ी, न उनकी फसल खरीदी गई, धान लूटा गया, आलू बर्बाद हुआ, बिजली महंगी है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, जानवर से खेत नहीं बच पा रहे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस बार मतदान करके जनता देना चाहती है। समाजवादी पार्टी जनता के साथ है, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। Crucial election. You prayed well for it. Very crucial election and I think so बहुत positive results आने वाले हैं। Are you happy that you have contested in politics, that the family is together? The family is together and moreover मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इस बार साथ है और वह विकास वाली सोच वाली सरकार लाने के लिए एकमत होके लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रही है बहुत ज्यादा कि महिलाएं बड़ी खुश हैं। बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया, महिलाएं सारी उनके साथ हैं। मैं समझती हूँ बीजेपी की सरकार ने ऐसे परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। हमें रोज आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती है और महिलाओं के साथ तो उत्पीड़न के मामले बड़े हैं, जैसे कि हमारे पास एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने तो डायल 100 और 1090 नाम की ऐसी सेवाएं शुरू की थी जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर और बेहतरीन हो। और मैं समझती हूँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो और लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया जाएगा। और हमारे राष्ट्रपति जी ने भी कहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे। That's it from me, Chaiti Narula on India Today. Keep watching India Today for more news and updates. Don't forget to log on to indiatoday.in or go ahead and download the app. I'll see you at 1 p.m. again with all the very latest as far as elections are concerned.